अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नूरुल अली और आप देख रहे हैं मीट द बॉस, विच इज़ अ सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम जिसका बुनियादी मकसद पाकिस्तान की सक्सेस स्टोरीज़ को सेलिब्रेट करते हुए आप तक पहुंचाना है ताकि आप भी उनकी कामयाबी का राज जान सकें। In today's episode, we are bringing you the story of Shahbaz Taseer, a Pakistani businessman and the son of former Governor Punjab Salman Taseer, who was kidnapped in 2011, just months after his father's demise, and was held in Afghanistan for 5 years by Uzbek militant group. Taseer was released in 2016. Isolated in captivity, Shahbaz Taseer clung desperately to the hope he would one day be freed. While his family was fighting for his release, Shahbaz was fighting to stay alive and sane in captivity. Taseer's family and friends welcomed him back with open arms. He's reconnected with childhood friends, gone out to enjoy his life, and is back to building the business. But he has a long way to go. वेलकम बैक टू another episode of Meet the Boss. और आज की हमारी स्टोरी महज एक सक्सेस स्टोरी नहीं है, rather it's a tale of valor, resilience, hope and survival. Let's get into it, and to kick it off, we are pleased to be joined by a living miracle, Mr. Shahbaz Taseer. Assalamu alaikum, sir. Alaikum, that was very sweet. Thank you. कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? Thank you so much for spending time for us. नहीं, thank you. सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे. Who is Shahbaz Taseer, other than a survivor, a businessman and an author? Shahbaz Taseer क्या है? That's basically all that I am. No, I have no other talents besides escaping the Taliban, doing business, and then it's just my family and friends. So I'm a very private person, other than the fact that I'm trying to sell this story and the book, which is a responsibility. Wow. आपने भी फैमिली की बात की. फैमिली में आप किससे ज़्यादा क्लोज हैं? This is a very difficult question. मेरी छोटी बहन मेरे साथ रहती नहीं है, but I love them both, and you know we have the best time together. Sharyar and Sherbano, मेरे छोटे बहन भाई. So we're very close. I'm very close to my khala and my mother, and you know we're all. It's like हम सब दोस्त हैं. Diplomatic. It's बहुत tough सवाल है. नहीं, ये वैसे ही सवाल हो गया ना कि मामा पसंद है, बाबा पसंद है. ठीक हो गया. जो बच्चे हैं, we're all best friends. So that's my real crew. Is the kids. Wow. और आपकी कोई बचपन की फॉन्ड मेमोरीज आपकी फैमिली के साथ और आपके फादर के साथ पर्टिकुलरली? बहुत ज़्यादा. अब्बा बहुत बिजी आदमी थे, you know, whether it was in politics or business, हमेशा बिजी होते थे. तो कुछ चीज़ें मगर वो डिमांड करते थे, लाइक सुबह का वक्त जो है, द किड्स शुड वेक अप अर्ली बिकॉज ही हैज़ 1 or 2 hours in the morning, you know, डिनर सब ने साथ करना है. एंड देन जो थोड़ा सा उनको वक्त मिलता था, he used to love taking us on holiday, and not जो आपकी typical understanding of a holiday जहाँ सारे बस पार्टी हो रही है और कपड़े खरीद रहे हैं. हम जाते थे to these beautiful old cities in Europe and museums, and you know it was just a really unbelievable experience growing up with him. And आज तक मैं ये कहता हूँ कि you know he was the most well-read, most well-informed person जो मैं कभी भी मिला हूँ. It was just a privilege कि हम उनकी कंपनी में थे. जिस तरह से उन्होंने आपको एक फादरली फिगर बन के दिखाया, जिस तरह से आपकी उनकी बॉन्डिंग थी, आपको लगता है कि आप वही लेगेसी अपने बच्चों में कर सकते हैं? नामुमकिन है. I mean I can try as hard as I want, but कोई भी my father, कभी कभार लोग समझते हैं कि मैं बहादुर हूँ क्योंकि मैंने ये इंसिडेंट सर्वाइव किया है. मैं हमेशा उनको बताता हूँ मैं नहीं हूँ. असल बहादुर लोग जो थे वो मेरे वालिदैन थे, मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा. अब्बा ने विलिंगली जो कुछ उनके साथ हुआ है ना, जानते हुए इसका क्या नतीजा है या इसका क्या कॉन्सिक्वेंस है, हमेशा, चाहे वो ही वॉज अ वेल सेटल्ड बिजनेसमैन इन दुबई एंड पाकिस्तान, मगर उसने वो सब कुछ फेंक दिया टू फाइट ज़ियाउल हक. बिकॉज वो कुछ लोग कहते हैं ना नुक्ते के ऊपर, बट वो सिविलियन सुप्रीमेसी और एक कॉन्स्टिट्यूशन जो इवॉल्व कर सकता है विद टाइम टू प्रोटेक्ट पाकिस्तानीज एंड एक्चुअली हमारी ज़िंदगी को इनरिच करे.
कोई ऐसी डॉक्यूमेंट नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान में जो एक ड्रकोनियन या पुरानी आउटडेटेड डॉक्यूमेंट हो। जैसे हमारे बहुत ज़्यादा जो लॉज हैं, बहुत ज़्यादा, और मैं कोई आपको कोई बहुत बड़ी बातें नहीं कर रहा, मगर आप सिंपल चीज़ों में चले जाएं, चाहे आपकी टाउन प्लानिंग लॉज हैं या आपके जो लोकल हाई कोर्ट के सिस्टम्स हैं, एनीथिंग, इट्स सो बैकवर्ड। 1800s के लिखे हुए हैं। 18 इट्स ऑल बैकवर्ड, यू नो। ये कौन पाकिस्तानी है जो आज ये बात डिनाई कर सकता है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन और एनी लॉ should evolve to protect and enrich our lives, benefit us. You know what I mean? Definitely. तो he was very brave. He took these stances. जिंदगी में ये जो भी उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, willingly उन्होंने ये किया। तो वो challenge किया। जी, he was a very brave man. And मेरी वालदा बहुत बहादुर हैं, because मेरे अब्बू हमेशा कहते थे, चाहे वो बिजनेस है या पॉलिटिक्स है, कोई भी चीज़ है मेरी ज़िंदगी में जिससे मुझे सक्सेस दी है, इट्स बिकॉज जो मुझे मेरी बैकबोन है, विच इज़ माई वाइफ एंड माई फैमिली। एंड बहुत उन्होंने सब्र किया है, चाहे जो जुल्म उनके खावन पे हुआ है, जो इनकासरेशन उनको बर्दाश्त करनी पड़ी, यू नो, एंड सब्सिक्वेंटली उनका मर्डर, यू नो, इट्स हॉरेबल। एंड 6 महीने बाद मैं अगवा हो गया। तो असल बहादुर लोग जो हैं, जो असल रोल मॉडल्स हैं, मैं हमेशा ये चाहूँगा कि मेरे बच्चे इन लोगों को देखें और इनसे इंस्पिरेशन मिले, यू नो, अपनी दादी और अपने दादा से, कि यू नो ये कैसे लोग सेल्फलेस लोग थे और सब्र करने वाले लोग थे, पेशेंट लोग थे, और जो हक की बात होती है ना, हक पे लड़ने के लिए तैयार थे हमेशा। I would like for them to be like that. अभी आपने अपने अब्बा की बात की, और हमें पता है कि एज एन इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर ही हैड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन कन्फाइनमेंट। तो उनकी एब्सेंस में क्या आपके ऊपर कभी वो थी रिस्पॉन्सिबिलिटी, या आपने कभी रोल प्ले किया है फैमिली का, वो जो एक रिस्पॉन्सिबल मैस्कुलिन फिगर होता है? पहली बात तो मैं वो, यू नो, आई वाज जस्ट अ किड। मैं 2-3 साल का था। आई थिंक आई वाज बोर्न इन 84, तो 5 साल तो हो गए थे मेरे वालिद साहब को ऑलरेडी फाइटिंग ज़ियाउल हक एंड जेल, इन एंड आउट, इन एंड आउट। आई थिंक हिज लॉन्गेस्ट इनकासरेशन वाज जब मैं मतलब मैंने अपने पहले कदम फैसलाबाद जेल में लिए थे। तो यू नो, मेरी बुक में एक पिक्चर भी है ऑफ अब्बा होल्डिंग मी। तो यू नो, I could never play any kind of role. I don't think he needed anyone to play a role. He used to play that role, and my mother played the other role. And I don't know if you need a masculine figure. He was the masculine figure and she was the feminine figure, but it's her role that kept my house together and my family together, because he was in jail. So I never got that opportunity, and you know, जब मेरे अब्बू का कत्ल हुआ था, उसके 6 महीने बाद मैं अगवा हो गया था। तो आई थिंक मुझे समझ भी नहीं आई थी हुआ क्या है बिफोर आई वाज गॉन। सो आई नेवर हैड अ चांस टू play any of this, which is why there's an overwhelming responsibility, not burden, but responsibility on me to help my mother and my younger brother, who actually उन्होंने हमारे businesses को संभालने की कोशिश की थी। एंड लोग ये नहीं समझते, मगर इस मुल्क में रहना बहुत मुश्किल है अगर आपके ऊपर किसी किस्म की गलत नज़र हुए। उसके बावजूद इस मुल्क में बिज़नेस करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। एंड यू नो, दे आर अनबिलीवेबल दीज टू पीपल, दैट थ्रू आउट जो मेरी फैमिली के साथ हुआ है, वो इधर रहे हैं, उन्होंने इधर काम किया है, और कोई और इंटेंशन नहीं है। इसके लिए हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, ये कोई अमेजिंग बात नहीं है। ये हर एक पाकिस्तानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने मुल्क को सर्व करना, इंस्टेड कि आपका मुल्क आपको सर्व करे। ये जॉन एफ कैनेडी की बड़ी फेमस थी लाइन, यू नो, डोंट आस्क व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, बट व्हाट कैन यू डू फॉर योर कंट्री। आई प्रॉब्ली गॉट इट रॉन्ग, बट इट्स समथिंग लाइक दैट। But yeah, so you know, I never got this opportunity. I don't have any regrets in life. If I have any regret, it's that I couldn't help my mother and my brother after मेरे वालिद साहब का जो कत्ल हुआ था। I couldn't help them in any way. As a matter of fact, I became a burden on them. I became a source of pain for them. This is something that actually lives with me. You know, लोग कहते हैं आपके साथ कोई ट्रॉमा है या कोई आप चीज़ वहाँ से वापस लेके आए हैं, तो नहीं, क्योंकि I have a lot of responsibilities. मैं बहुत blessed हूँ कि मैं यहाँ बैठ के आपसे बात कर सकता हूँ।
तो ये जो ग्रेटफुलनेस होती है या जो अल्लाह की तरफ से आपको कोई ब्लेसिंग आती है, इट आउटवेज योर ट्रॉमा और योर बैड एक्सपीरियंस. कभी कभार यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर द गुड थिंग्स दैट कम आउट ऑफ समथिंग बैड. कभी भी आपने ज़िंदगी में कुछ करना है, उस सक्सेसफुल चीज़ कोई करनी है, वो रास्ता हमेशा मुश्किल है. ये कोई आदमी ऐसा नहीं है जो सक्सेसफुल वहाँ बैठा हुआ है जिसको हैंड आउट मिला है. जिन लोगों को हैंड आउट्स मिलते हैं वो उसको वेस्ट करते हैं. सही है, शॉर्ट टर्म भी होता है. शॉर्ट टर्म होता है ये. हम लोग बहुत लोगों को देखते हैं जो अमीर होते हैं, जिन्होंने अपने माँ बाप से चीज़ें ली होती हैं और हम कहते हैं कितनी ईजी ज़िंदगी है, मगर नहीं है. सस्टेन नहीं कर पाते वो. सस्टेन नहीं, उनकी कोई लेगेसी नहीं रहती. लेगेसी उन लोगों की है जो ये मुश्किल रास्तों पे चलते हैं, कायम रहते हैं और सक्सेस अचीव करते हैं. तो anyways, that's how I feel. Right. So your life took an unexpected turn on the unfateful day of 26th August, I guess, 2011. So what did you think when you realized कि अब शहबाज तासीर का शशका जो है वो गुलबर्ग में रह गए and now these people are in control? आपने पहली क्या थॉट थी उस वक्त आपने ये रियलाइज किया? शहबाज तासीर का शशका Yes. उस वक्त नहीं उतरा था. आई थिंक शहबाज तासीर का शशका वाज बीटन आउट ऑफ मी. तो आपने इजीली सबमिट नहीं किया? नहीं, मैंने बहुत ईजिली सबमिट किया था, मगर वो बात नहीं होती. बात होती है जब आप डरे होते हैं. So you comply, you listen to the instructions that are given to you because you're so scared. आप इतने डरे होते हैं कि जो भी आपको बताया जाता है, you're like ये मैंने फॉलो करना है, कुछ भी हो सकता है, राइट? आपको पता नहीं होता क्या हो सकता है. अभी ये एक डिफाइंड बॉक्स नहीं है, इट्स अनडिफाइंड. सो देन थिंग्स हैपन, लाइक यूर लाइक मैं देखो मुझे ज़मीन पे भी सुलाते हैं, खाना भी नहीं देते, गालियाँ भी देते हैं, पानी भी नहीं देते, नहाने भी नहीं देते, दांत ब्रश भी नहीं करने देते, बाथरूम भी मैंने एक डस्टबिन में करना है. अब ये मुझे कहता है कि ये डस्टबिन अपने हाथों से साफ़ करो. यू नो, ये है शहबाज तासीर का शशका. मैं शहबाज तासीर हूँ, मैं क्यों डस्टबिन साफ़ करूँ, राइट? और उसके ऊपर क्या होता है? what do you think when you tell this guy I'm not doing it because आपको शहबाज तासीर का शशका याद आ गया, right? तो वो they beat it out of you, they remind you there's no शहबाज तासीर का शशका. So but जो चीज़ें जिन्होंने मेरी मदद की थी was not the शशकाज of life कि मैं कौन हूँ, मेरे पास पैसे हैं, मेरा बाप कौन था, मेरी माँ कौन, ये इन चीज़ों ने मेरी मदद नहीं की. मगर जब आप ग्राउंडेड हो जाते हैं, हम्बल हो जाते हैं, एक्चुअली जब आप ब्रेक डाउन हो जाते हैं और अपने आप को एज नथिंग देखते हैं, व्हाट एम आई, व्हाट एम आई मेड आउट ऑफ, राइट? यू डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ योर ओन रिस्पेक्ट, you define your own, you find your own strengths and you define your own respect, right? And then अगर आपकी कोई वो boundaries violate करे, so you stand up in a different way. वो आप किबर से नहीं खड़े होते, शहबाज तासीर कौन है नहीं खड़े होते, बट मैं ये इंसान हूँ और मेरी ये लाइंस हैं और तुम ये नहीं कर सकते मेरे साथ, और अगर करना है तो करो. you're not going to get a broken man out of this. और ये आई थिंक मेरी जीन्स जेनेटिक है, बिकॉज ये मुझे सिर्फ मेरे बाप से आ सकता है. और इन चीज़ों ने मुझे हेल्प मी इन टर्म्स ऑफ डस्टबिन भी साफ़ कर दिए, झाड़ू भी लगा दिए, मार भी खाई, सब कुछ खाया, मतलब एवरीथिंग. बट आई थिंक बाय द एंड ऑफ इट जो मेरा रवैया था उनके साथ, जैसे मैं उनसे आर्ग्यूमेंट करता था बेस्ड ऑन इंटेलेक्ट, जैसे मैं उनसे बात करता था वाज बेस्ड ऑन द रिस्पेक्ट दैट माय रिलीजन गेव मी. They also had to draw a line and respect. My torture did eventually end. My incarceration did eventually end. My chains did eventually come off. And they didn't come off because these people wanted to take them off. I took my own chains off. सही है, मैंने अपनी chains खुद उतारी थी. मैंने अपनी डाइट प्लान, मील प्लान खुद बेहतर किया था. मैंने ज़मीन से एक छोटा सा तकिया और एक ब्लैंकेट उनसे अपने, मतलब I did all of this. I spent my first winter without any socks, without anything warm, in front of a little box जिसमें एक लकड़ का पीस जाता था जो 1 घंटे बाद ख़त्म हो जाता था, और वो सिर्फ लोहे की गर्मी थी. Otherwise, Mir Ali में you can check what winter is like, talk to the locals, ask them how do you get ready for the local. But to leave someone in a dark room freezing to death, but you don't freeze to death. You're just cold and miserable and sick. But that's what they want. This is imprisonment. This is the result of your freedom being taken away and you being incarcerated, not in a
state in jail institution, but in the hands of terrorists. And my incarceration is actually should help you understand जो लोग आपके साथ जैसा उनका रवैया होता है, जैसा उनका तरीका होता है आपके साथ, ये चीज़ आपकी मदद करती है उनको समझने में ये कैसे इंसान है. सो ये ऐसे इंसान है. तो आपने मतलब ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका रवैया ऐसा था कि उन्होंने उनके रवैये को किसी हद तक बदल दिया. Forceful, yeah. For example, जब हम शवाल के अंदर थे तो नाइटली रेड्स होती थी पाकिस्तान आर्मी की और जेट स्ट्राइक्स होती थी और बहुत हैवी बम्बार्डमेंट होती थी. एक रात वो खुद एक छोटे से कमरे में थे और मुझे साथ एक जो मतलब बिल्कुल ही छोटा सा आई गेस बकरियों का ही कमरा होएगा. पहले शुरू में भी उधर था, एंड में भी उधर था. तो एक बकरियों टाइप के कमरे में था. एनीवेज जब वो जेट्स आए हैं दे रैन. अब होता ये था यूजुअली कि वो एक बंदा आके मेरी चेन खोलता था और हम साथ भागते थे और सारी प्लानिंग हुई होती थी और मुझे भी पता था किधर जाना है उनको भी, बट कोई तो मेरी चेन आके खोलता था. उस रात वो भाग गए, करीब बमबारी हो रही थी एंड वो सब भाग गए. दे लेफ्ट मी देयर. सो 6 घंटे आई वॉज बीइंग मतलब मैं बमबारी हो रही है एंड आई कैन फील इट कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर और करीब आ रही है और करीब आ रही है और करीब आ रही है. और मैं सिर्फ मुझे याद है कि मैंने ना सोचा कि 2 नफल बंदा पढ़ ले, आई एम प्रॉब्ली गोना डाई टुनाइट. बट मेरे से नमाज नहीं पढ़ी जा रही थी. वो बॉम्ब जब फटता था ना मेरी माय नमाज वुड ब्रेक एंड मेरे से जिक्र नहीं हो रहा था एंड आई वाज ट्रेम्बलिंग. आई वाज जस्ट वेरी स्कैर्ड दैट दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू डाई. टू अ पॉइंट दैट आई बिकेम नम. वह घंटे गुजरते हैं आप मर नहीं रहे, सिर्फ आपके कान जो हैं वो डेफ हो गए हैं. एंड इट स्टॉप्ड. और जब वो रुकी है उसके आधे घंटे 45 मिनट्स बाद ऑब्वियसली दे केम वेरी एम्बैरेस्ड, यू नो ये मुजाहिदीन है supposedly, and they left me. तो वो आया है बस उसने वो खोला है. he had a smirk on his face like you know सब बच गए हैं and he threw the key. I unlocked my chains. I took them off. I picked up मेरी बस जो भी प्लास्टिक का बैग with 2-3 चीज़ें, एक छोटा सा. I just picked it up. I went into the room that they sleep in, rolled it down, put a pillow, grabbed a blanket, lay down. Nobody said anything. So you know, you earn your own respect. I'll tell you another thing. जब इन्होंने मेरा मुंह बंद किया था तो they sewed it shut. तो यूजुअली अब ये होता है कि आप टॉर्चर भी हो रहे हैं, आप इनकासरेटेड भी हैं, आप किसी किस्म की भीख मांगेंगे. तो जो एक उधर एक गार्ड था उसने आया, उसने कहा यार थोड़ा सा खा लो. इस तरह तो बिल्कुल ही मतलब मैं भी इंसान हूँ, इस तरह तो नहीं होता. तो आई जस्ट टोल्ड हिम गेट लॉस्ट. आई सेड आई एम नॉट इंटरेस्टेड. करो जो तुम कर रहे हो, कंप्लीट इट. You know, don't offer me your nibbles and I don't need it. You want to give me something, take my chains off and send me home. Otherwise, do whatever you have to do. So, I mean, I'm not saying anything. I'm just saying you define your own boundaries in life. And you have to earn your own respect. And it's not easy. It's very difficult. And I'm sort of quite, you know, I'm like that. So, I found my own place. I was a prisoner, but I found my own respect. I defined my own boundaries, and it helps you survive. And ceaseless. So you revealed in one of your interviews कि आपका जो कैप्टर था वो कहता था कि मैं इसको 3 साल से तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहा हूँ. And then you said कि जो उज़्बेक्स हैं they are ruthless and merciless and best fighters. उस मतलब इस सारे सिचुएशन में how did you hang on hope? So that's you basically answered your own question in terms of यही थी. I hope is all I had. And उनका जो भी जुल्म था वो करते थे कि ये हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, सही है. और मैं जो जुल्म सहता था वो मैं कहता था कि अल्लाह का इम्तिहान है और मैं कबूल करता हूँ. जो भी मेरे ऊपर इम्तिहान है मैं कबूल करता हूँ, सही है. और ये हम दोनों की जंग थी एक दूसरे के साथ. एक बंदा कहता था कि वो मेरे पे जुल्म कर रहा है अल्लाह के नाम पे, और मैं कहता था मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ अल्लाह के. नहीं, बर्दाश्त नहीं. मैं अल्लाह का इम्तिहान, कोई भी इम्तिहान है मुझे कबूल है. जो भी इम्तिहान है अल्लाह का मुझे कबूल है. बस मैं बेहतरी के लिए दुआ मांगूंगा. वो बड़ी फ़नी बात है. एक बार वो इतना जुल्म करते थे कि एक बार उसने मुझे कहा कि गलती करके मुझे लानत ना भेज देना. सो आई वाज लाइक मैं तुम्हें क्यों लानत भेजूंगा.
अगर मेरी कोई भी एक दुआ है जो अल्लाह ने सुननी है, और मुझे क्या पता कितनी दुआएं रह गई हैं, मेरी तो ज़िंदगी अब एक टिकर पे, इट्स जस्ट टिक टिक एंड इट कुड बी ओवर एनी टाइम, तो व्हाई वुड आई वेस्ट एनी दुआ दैट आई हैव ऑन यू व्हेन आई कैन प्रे फॉर माई ओन बेहतरी. एंड आई ऑलवेज इंकरेज पीपल, लोग बहुत जल्द लानत भेजने में पाकिस्तान में बहुत तेज़ हैं, लोगों को बदवा और लानत भेजने में. और आपको कभी भी नहीं पता, अल्लाह आपकी 100 दुआएं नहीं कबूल करता, सही है. आपकी एक दुआ कबूल कर भी उसकी ज़ात के लिए बहुत बड़ी बात है. और ये आपने अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर दी किसी को बदवा देने में, तो अपने फ़ायदे, मतलब आपको तो अपने फ़ायदे की परवाह नहीं है. एंड ऑलवेज थिंक ऑफ योर बेनिफिट, यू नो व्हाट आई मीन. प्रोटेक्ट योरसेल्फ. And dua is a beautiful thing. It protects you. Angels protect you. Zikr, Quran, the angels protect you. I find it very difficult. मैं इधर जब ये बातें करता हूँ, क्योंकि लोग कभी कभार समझते हैं शायद ये पागल है, ये क्या बातें कर रहा है. मगर जब आप आयतुल कुर्सी सुबह शाम और रात पढ़ते हैं तो thousands, hundreds and thousands of angels come to protect you. तो मेरे वालिद साहब जो थे वो वो कहते थे ये आयतुल कुर्सी मुझे बचाएगी, और उनकी जान चली गई. और एक बार मेरा किडनैपर भी था, वो भी कहता था कि तुम्हारा बाप बड़ा कहता था आयतुल कुर्सी मुझे बचाएगी, मर गया एंड में. और मैं कहता था कि आप यही मसला है ना, आप हमेशा अल्लाह की बातों को दुनियाई चीज़ों पे रिलेट करते हैं, हालांकि अल्लाह ताला आपको खुद बताता है कि मेरे से दुआ करना, मेरा जिक्र करना इस दुनिया में तुम्हें शायद कोई फ़ायदा ना दे, मेरी मेहरबानियाँ तुम्हें सिर्फ दूसरी ज़िंदगी में मिलेंगी. और जब आप आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो आपकी रूह, सही है, आपका ब्रेन, आपका हार्ट, ये चीज़ें हैं जो वो एंजल्स प्रोटेक्ट करते हैं. और इससे आपको और ज़्यादा प्रोटेक्शन क्या चाहिए इंसान से या शैतान से. Exactly. सो ये फ़र्क था. मैं कभी होप नहीं हार सकता था, क्योंकि मैंने एक बार कुरान में भी पढ़ा था कि नाउमीदी कुफ्र है. ये कोई धमकी नहीं है. ये क्यों आपको कहते हैं कि यार आपके लिए चाहे जितना मुश्किल रास्ता हो जाए, चाहे कितनी अंधेरा आपका की रात है, सही है, तो कितना मुश्किल है, अल्लाह के लिए इट्स नथिंग. एंड सो अपने सबसे मुश्किल वक्त पे कलमा पकड़ो और देखो उसका तुम्हें फ़ायदा क्या मिलता है. अगर दुनिया में नहीं मिलता मैंने तो मेंशन आखिरत में. करना था, आपने अपने किसी इंटरव्यू में जिक्र किया था कि आपको शायद आप हेलुसिनेट कर रहे थे, आपको आपके वालिद नजर आए थे और उन्होंने कहा था कलमे को पकड़ लो. जी, जब मुझे इनिशियली अगवा किया था, जो पहले 3 दिन थे, ये मुझे केटामीन इंजेक्शन दे रहे थे और मुझे कुछ सही तरह समझ में नहीं आ रही थी क्या हुआ है. तो ये एक्चुअली सिर्फ मैंने अपने करीबी दोस्तों को बताया. इट्स वियर्ड, इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग कि मैं वो उस केटामीन हेलुसिनेशन में मुझे कुछ नहीं समझ में आ रही थी क्या है. और बस मुझे याद है मेरी आंख खुलने से पहले मेरे अब्बू ने मेरा हाथ बस पकड़ा था और उसने कहा था कि कलमे को पकड़ो. एंड वो तीसरा, मतलब पहला दिन था, पहले 3 दिन जो थे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे फजर के वक्त, ये मुझे मीर अली ले गए. तो 2.5 days जो मेरे लाहौर में थे, मैंने जब मैं मतलब देन माई रोड वाज कुरान विल सेव मी, अल्लाह विल सेव मी, जिक्र विल सेव मी, नमाज विल सेव मी. मैं एक रोज़ा रखता था. दाऊद अलैहिस्सलाम की सुन्नत होती है, एक दिन आप रखते हैं, एक दिन आप नहीं रखते, एक दिन आप रखते हैं, आप नहीं रखते हैं. पता नहीं लोगों को उसकी क्या राय है, बट मैं रखता था क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे नहीं पता मैं कब चला जाऊंगा. तो जो मेरे अब दिन रह गए हैं वो मैं इबादत में गुजारता हूँ. तो मैं तहज्जुद पढ़ता था, मैं जितने नफल पढ़ सकता था, कुरान पढ़ता था, बड़ी एक्सटेंसिवली उसको पढ़ता था, समझता था. वो मुझे एक पीस देता था, एक पीस जो आपको कोई इंसान और कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं दे सकती. और मुझे उस वक्त सिर्फ इसकी ज़रूरत थी. तो यही बात है, ना उम्मीदी, यू कांट बी ना उम्मीद. अल्लाह के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है. और वो सिर्फ आपको कहता है कि मेरी तरफ जो है हाथ बढ़ाओ और कदम बढ़ाओ, आई विल हेल्प यू, आई एम विद यू. तुम एक कदम बढ़ाओ, मैं 10 बढ़ाऊंगा. मैं 10 बढ़ाऊंगा. मतलब इमेजिन द लव एंड द ग्रेस, दिस इज सो. अगर आपको करोड़ भी करने हो in his way, please do it. Just run towards him. He will, he's the most merciful. And I know it sounds, कि क्या बातें कर रहा है कभी कभार, but it's true, यार. It saved my life. It saved my soul. It saved my mind. It saved my, everything. And it does today. Till today, it protects me. And वापस आके रीसेटल होना, काम, जिंदगी, ये भी आसान नहीं होता. ये भी एक इम्तिहान होता है. मेरे लिए सबसे बड़ा, मतलब एक, वो कहते हैं ना, जो डिलेमा ज़िंदगी में होता है वो यही है कि
मैंने एक आयत पढ़ी थी जिसमें लिखा हुआ था कि जब तुम पे मुश्किल आती है, मैं मतलब नॉट द डायरेक्ट ट्रांसलेशन बट द क्रक्स ऑफ इट, जब तुम पे मुश्किल वक्त आता है तो तुम हमें याद करते हो और फिर हम तुम्हारी मुसीबत को हटा देते हैं। ना शुक्र ना होना, ना शुक्र ना होना कभी भी। सो मैं अपने आप को इस तरह बैलेंस करता हूँ, और ये मेरी बाउंड्रीज हैं। माई बाउंड्रीज आर डिफाइंड बाय अल्लाह एंड यू नो द प्रॉफिट सुन्ना एंड द कुरान, एंड it helps me, you know, it helps me every day in my life move forward. Yeah. आप इतना पॉजिटिव और ग्रेटफुल साउंड कर रहे हैं. They took 5 years of your life. There's no anger there. No, university took 5 years of my life, school took 18 years of my life. Yes, लेकिन वो इतना वो इमोशनल टॉर्चर हो सकता है, लेकिन वो फिजिकल नहीं नहीं, एक्चुअली जब मैं उधर होता था मैं कहता था यार, यू नो, आई स्पेंट 23 years in school and university and all of this, कि एक चीज़ भी नहीं मुझे सिखाई इधर कि हाँ मैं इधर what should I do over here. So yeah, you know, but you know, you were talking about my dark humor. It helps balance. देखें, 5 साल आप मेरी ज़िंदगी के गए, I agree with you. I got 6 years back already. So जितने साल मेरे से लिए थे, I've got 1 year more. Allah has given me that. I remember each day of the 4.5, 5 years that I lost. Each day I remember. The book that you read right now is an edited, short, final version that an audience that is literature that, you know, you can consume and relate to, and, you know, but the story itself is 1600 and something days, you know, and I remember each day. I can talk to you about each and every single day because I remember it, and it's every day. Some of those days are marks that I carry, you know, with me. So I know what I lost, but the fact that I have this is supersedes it. You know, when I look at my daughter, when I look at my son, when I even look at my, you know, we're sitting in my library, I just look across, I can see my family. You know, this is an incredible gift. So the 5 years that I lost is one part of it, but what I got back is, you know, why would I be negative? What do I have to be negative about? I've got everything that I prayed to Allah for. Every single thing that I prayed for, I got. Wow. Okay, so now there's this intrusive question. But आप जब कैप्टिविटी में थे, उसके बाद आप वापस आए हैं, और फिर आपकी जो मैरिटल लाइफ है उसको काफ़ी मुतनाज़ बना दिया गया था. बहुत कंट्रोवर्सीज आई, सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड्स भी चले, और फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी. तो अपेरेंटली आप एक टॉर्चर से और एक शिट होल से निकल के आप एक दूसरे में आए थे. आपने उसको कैसे डील किया? It's not like that, and the truth is that देखें, I have a lot of respect for every person that's ever prayed for me or played a role in my life in a good way, or whatever. Relationships are what they are, and people grow apart and move apart and become different people, and it happens. So it's nothing like that. I have a beautiful, beautiful miracle. The miracle is not me. The miracle is not my life even that I have back, because the purpose of my life now is for my children. I work for my children. I do whatever I do so that they have a safer, better life, kind of जैसे हमारे माँ बाप करते थे, you know. तो और मुझे पता है कि मैंने कितनी रातें, बिकॉज जब आप देखें, दो इट्स वेरी फनी, ये सिर्फ हैदर गिलानी आपको ये बात समझा सकता है. मैंने कितनी रातें दुआएं की कि मेरी तो औलाद भी नहीं है. आई हैव नथिंग. व्हेन आई डाई, आई एम फिनिश्ड ऑन दिस अर्थ. आई हैव नथिंग टू कैरी एनी नेम. आई डोंट हैव एनीथिंग दैट आई हैव एवर डन टू बी कैरिड फॉरवर्ड, एंड no one to even do it, you know. So many of us are ordinary and live ordinary lives, और जब हम मर जाते हैं तो फिर मैंने कुरान में पढ़ा था कि वो एक औलाद ही होती है जो आपकी लेगेसी लेके जाती है, आपके लिए दुआ करती है, आपके लिए चैरिटी देती है, ये सब कुछ करती है. तो चलो, मुझे तो ये अपॉर्चुनिटी मिल गई कि मैं अपने वालिद साहब के लिए कर सकूं, बट कितना मेरे प्रिविलेज है कि आई हैव 2 children. आई नेवर थॉट दैट आई वुड हैव देम. आई नेवर थॉट दैट आई वुड हैव एनीथिंग. सो ऐसी कोई बात नहीं है. लाइक आई सेड, मैंने जिस चीज़ के लिए दुआ की थी वो मुझे अल्लाह ने दी है. और आपको कभी भी कोई प्लेटफॉर्म होए एज अ मर्द इन पाकिस्तान, ये थोड़ा सा क्लीशे भी बन गया और बहुत लोग इस बात को यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे में, मगर
I actually come from a family where मेरे वालिद साहब ने एक बहुत गरीब औरत जो सबसे लोएस्ट सबका है आपके मुल्क में उधर से आते हैं, और ये भी नहीं कि वो मुसलमान हैं, वो माइनॉरिटी हैं, वो क्रिश्चियन है, पता नहीं हम उनको माइनॉरिटी कहते हैं, बट वो एक क्रिश्चियन है, वो एक इंसान है, और उनके हक हैं, और वही हक जो आपके हैं. My father died protecting, people. The people that have groomed me are people like, Asma Jahangir and Faiz Ahmed Faiz, and, people that have fought and worked really hard for this society to become more progressive and tolerant. So these platforms are not there, like I said, for anything that I've done. I have a platform to speak or be asked a question because of the sacrifices of people before me. So I'm not using these to, insult anyone or do any of this. It's not for this. This story is basically, it's a story about my family and what they went through in terms of मेरे वालिद साहब के साथ जो हुआ था. I know वो तैयार थे, but एक जुल्म था, एक गलत चीज़ थी जो मेरे साथ सब्सिक्वेंटली हुआ. वो जो भी थी अल्लाह की तरफ से इम्तिहान था, मगर anything beyond that is just, it's unnecessary in my life in terms of ये चीज़ें important थी. Now I have to live, like I said, for my children, to work. I have so many people that work under me, they depend on me. So this is what this platform is for. If I'm positive, it's because life has been good to me and kind to me. If I've done, people make mistakes, but people also grow, people also learn, people, and I would never use any platform to say anything negative about anyone, unless it's Rana Sanawala. Fair enough. Oh, nice. As they say, what doesn't kill you, it gives you tons of unhealthy coping mechanism and dark humor. And your dark humor is self-evident. हम ट्विटर पे देख रहे होते हैं, ये राना सनाउल्लाह भी देखा था हमने. तो क्या coping mechanism है आपके? कोपिंग नहीं यार, लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं. एक्चुअली मेरी छोटी बहन ने ये मेरे से आर्ग्यूमेंट शुरू की है दैट यू यूज ह्यूमर एज अ कोपिंग मैकेनिज्म. सो इट्स नॉट ट्रू, राइट? आई हैव ऑलवेज बीन फनी. आई हैव ऑलवेज बीन दिस पर्सन बिफोर आई गॉट किडनैप्ड. नाउ आई बिकम वर्स, बट आई वाज प्रीटी मच द सेम पर्सन. Humor is a wonderful thing. Okay, some of the most amazing things that I've learned in life have been through humor. And this is going to sound really weird to you, but जब मैं 18 साल का था तो मैं वो उस generation of मुसलमानों में से था जो 9/11 के बाद यूनिवर्सिटी पहली बार जा रहे थे. वो जो बच्चे 12वीं जमात से फर्स्ट ईयर कॉलेज जा रहे थे, वो जो बैच था across the world मुसलमानों का, I was one of them. So I saw, for the first time in my life, a form of racism and people that looked down on me, A, because I was brown, B, because I was Muslim, and C, because I was Pakistani. So it was a horrible feeling for a young 18-year-old who I'd lived a very protected life, and my parents had given me a lot of privileges, right? So somehow you always think racism is associated and prejudice and persecution is always with the poor people in your society, right? Society. That's what you would think, but that's not true, and that's not how persecution works, right? But if you've never faced it, you don't know. And when you're a kid, and you have no understanding of these things. हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें कौन racist होएगा? हम तो we're surrounded by Pakistanis and we're surrounded by Muslims, right? It's your first exposure with a foreign entity that puts you in your, I wouldn't say your place. Actually, that's a very wrong thing to say, but actually takes you off your place, and you're like, what just happened? So. It was a very strange time growing up, facing all of this, and it helps you evolve as a person. It shows you this side of life that you didn't even think existed. I forgot the original question. Sorry. Coping mechanism. Yeah. So so the reason that I was telling you about racism and facing it. The first people that helped me understand what racism was, what persecution was stand-up comedians, was black stand-up comedians like Chris Rock, like Eddie Murphy, people like George Carlin. He was white, but I learned so much
about racism and politics and society and how we look at women and general prejudice in law in different things through stand-up comedians. And I have a lot of respect for them. And so it's not a coping mechanism. It's actually a way, I found it educational. And yeah, it might be a coping mechanism, but it's a very good one. In terms of it helps you release, it also brings joy to you, and it brings joy to other people. Sometimes I saw when I walked through that, जब मैं वो उस जहाज से उतर के वो एयरपोर्ट लाउंज में आ रहा था, मैंने अपनी फैमिली की आंख में एक चीज़ देखी थी, an unknown thing, कि ये टूट चुका है, ये उनकी तरह बन चुका है, थोड़ा सा तो बन चुका होगा, या मगर ये वो आदमी नहीं हो सकता. That was gone from their eyes. So when I was funny, when I am funny, whenever something bad happens, whenever something dark happens, whenever, जैसे हम मेरी kidnapping के बारे में बात कर रहे हैं, right? If I can be funny about it, if I can make you laugh about it, then I'll bring some joy to you and I'll bring some joy to me. And it might not be more of a coping mechanism, but a healing mechanism. So yeah, I think humor is beautiful. I think if you can laugh at something bad that's happened to you, मेरे अब्बू ये कहते थे कि आपके साथ जिंदगी में सबसे बुरी चीज़ हो ना, if you overcome it, whenever you look at it, आपको हंसी आएगी, यार वो वक्त जो था, मैं तो सोचता था it's the end, और here I am, a better person because of it. True. आपकी अगर लाइफ को देखा जाए तो हम उसको 3 हिस्सों में कर सकते हैं ना, एक बेबी तासीर, और उसके बाद एक शैबी टी, एंड देन दिस द शहबाज तासीर, एन ऑथर. कोई एक ऐसी चीज़ जो इन तीनों में कॉमन हो? नहीं. कोई नहीं. I lived a very good life before I was kidnapped, and my parents are fantastic human beings. खुद उनकी ज़िंदगी में वो कैसे बड़े हुए. My father worked for everything he had. उनको कोई चीज़ प्लेट पे नहीं मिली. He was an orphan by the time, his father died when he was 6. He didn't inherit anything. He didn't get anything except a few books जो अभी भी उनके पास हैं. मतलब उनकी चीज़ों के साथ हमारे पास अभी तक हैं. And the only thing that he wanted was to preserve and enrich his father's name. So, I lived a very privileged life, a very blind life in a bubble. And that was kind of what Shabby Tea was, an outcome of that. But a very loved life, very good life, very happy life. There's nothing wrong with it. I had fantastic, amazing friends and amazing relationships that I have today. The same people. You say that so many people, friends and family prayed for you. It's those friends and family that prayed for me. And because of those friends and family, other people found out and prayed for me. You don't know what kind of a person I am, but through my friends and through my family, you realize, maybe some people said he deserves to die. But actually, unanimously, मुझे तो लोगों ने मेरे लिए बहुत दुआ मांगी, और मुझे आज तक कोई ऐसा, मैं एक बार एक ग्रोसरी की दुकान में था अपनी बेटी के साथ, तो वो ग्रोसरी कार्ट के ऊपर थी, और मैं बस वॉक कर रहा था, और एक मतलब ओल्डर खातून थी, और वो आई मेरे पास, और उन्होंने कहा, बेटा आप मुझे जानते नहीं हैं मैं कौन हूँ, मगर मैंने अपने बच्चे के लिए इतनी दुआ नहीं की जितनी मैंने आपके लिए की है, और मैंने अभी आपको आपकी बेटी के साथ ग्रोसरी देखी, और बस मेरे दिल में ये बात आई कि अल्लाह हर इंसान की दुआ कबूल करता है. तो मतलब मेरे लिए अक्रॉस द बोर्ड जितना लोगों ने प्यार और जैसे उन्होंने मेरे लिए दुआ की है, ये अल्लाह के, इट्स द बिगेस्ट ब्लेसिंग दैट आई हैव. हम अगर आपकी बुक की बात करें, टाइटल तो उसका बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कोई ऐसा चैप्टर या कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपके दिल के बहुत करीब हो? Actually, इस पूरी बुक में the only chapter that is very difficult for me. वाक़या बागा था. Yeah. अभी भी मेरे से पढ़ा भी नहीं जाता. Before handing it in, it's the only chapter that I every chapter. By the way, आपकी बहन जो थी, she sat with me and मेरे voice notes को type करके, फिर like she really helped me with the whole process. She's a lovely girl. But she will tell you ये कितनी लंबी और exhausting process थी जो जैसे मैं कह रहा था.
ये वो चैप्टर था जो एक बार मैंने और मेरे मामू ने बैठ के, मतलब आई रोट इट, माई मामू एंड मी read it, what I'd written. We बड़ी मुश्किलों से edited it once, and then we forced ourselves to edit it a second time and read it to Shariar, who walked out halfway through, and then came to me privately and gave me a few things. Try this and try that. But it was extremely difficult. My sister couldn't read it. The first time she read it was when the book was published. And my mother, I had to read it to her once. And it was just so exhausting and so draining. And the worst part was not for me, but to see her. For me, it was just to see her, relive that day, relive the entire thing. It was very unfair for my mother and my family. So that is it's closest. I don't know if it's closest to me, but it was the hardest thing that I've ever had to write. You really made this thing emotional now. I can see that. I'm so sorry. लेकिन आपने ये सारा एक आपकी कैप्टिविटी इट्सेल्फ एक बहुत पेनफुल चीज़ थी. उसके बाद आपने उन सारी पेनफुल मेमोरीज को रिविजिट किया व्हाइल राइटिंग द बुक. तो आपने सिर्फ इसको मैनेज कैसे किया? काफ़ी मुश्किल था, बट मेरी वाइफ जो है, शी इज़ अमेजिंग. कभी कभार मैं आई एम just like, yeah, I don't even need to do this. Why am I doing it? So, you were mentioning that very difficult sort of period. So she told me that, look, man, you have to tell your story as well. The real story. Who Shahbaz Taseer is and what actually happened to Shahbaz Taseer. And so she's been amazing, and just, Mama, I don't know what I would do without her. It's very difficult for her, because Exactly. forget reading about your husband, but and she's lived it with me. ये पूरी किडनैपिंग जो है, उन्होंने एवरी डे जो मेरे साथ होता था उनको पता था. एक्चुअली लोग समझते हैं कि हाउ डिड यू रीविजिट these traumas, and I'm so lucky that I got to do all this with my wife and my mother and my mamu, with everyone and supporting you. everyone supporting me. Sometimes I think I always wonder how my life would be if I didn't have all this support. And I think it's another thing. ये मेरे से लोग सवाल पूछते हैं कि आप वापस आके how did you settle well? And I always say this, it's impossible without these these people. And they ground you as well. Yesterday I tried to steal an award from Sunday Magazine's office. I saw that. So, my brother quickly took it. No, but, banter aside, but it's nice, they ground you. We all keep it real with each other. And for me, I really needed that when I came back. I didn't know what life was. I didn't even know how to make a phone call anymore. I didn't know how to use a smartphone. So I didn't even know how to make a phone call. I went right back to the Stone Ages and then came back. And sorry to your earlier question, like this Shahbaz Taseer is an evolved species from all of these amazing people and their experiences and their help, and so whatever you see now is someone, if he's successful, it's because of all these wonderful people and how they've supported me. आपको लगा था कि जब आप वापस आए हैं तो लोगों ने आपको उस तरह से मतलब उनको लगा कि ये थोड़ा ट्रॉमेटाइज्ड है, मतलब नॉर्मली एक्सेप्ट ना किया हो? I think अभी भी कहते हैं. Yeah, but मैं एक आपको वैसे जिंदगी की बात बताऊंगा. I don't care लोग क्या कहते हैं at all. I think if somebody doesn't know you and they speak negatively about you, it says more about them than it does about you. And so I've never cared. I just do what I have to do, okay, and what I think is necessary. So I do that, and it's so easy to say that you don't suffer from trauma while you're suffering from trauma. It's so easy to hide it. It's so easy to run away from it. It's much more difficult to face it. I never say that I don't have trauma. I have lots of. I have मेरी कमर जो है ना is
कुछ लोग कहते हैं scars, but I say it's like a canvas. You know, like art का canvas नहीं होता, आप एक painting को देते हैं और वो it speaks to you. तो अगर आप मेरी कमर को देखेंगे, वो आपको एक स्टोरी बताएगी, एक इंसान की ज़िंदगी की कहानी आपको बताएगी. और ये कहानी जो है, इसने मुझे has made me kind of, you know, what you see today. So I don't care about what people think. Most likely he's covering trauma. I've faced everything that's happened to me in my life head on. I've taken it on, just in the right क्या कहते हैं place. For example, you don't deal with trauma on Twitter. You deal with it with a therapist. I've met the best therapist. I don't have PTSD. I don't have certain things, but I do have, you know, it's not like chit free है. बहुत मसले हैं that I have to work on every single day. चाहे वो मेरी physical, mental तो बहुत दूर की बात है. The physical problems are even, you know, I had to spend 8 months working slowly, working out, because मेरी हड्डियाँ नहीं इस्तेमाल हुई थी 4.5 साल में. मैं literally दिन में 20 घंटे लेटा हुआ होता था और बाकी घंटे बॉम्ब से भागना होता था, या शायद वो भी लेटा होता था अगर नॉर्मल दिन था. I couldn't move. So मेरी कमर, you know, I slouch. I have to keep forcing myself to do this. It makes me, you know, it's more uncomfortable. My everything, you know, breaks down. Have to go to the doctor, do this. It's all over, but it's not traumatic. It's all fixable and solvable, and you work every day and you fix. Like, one of the things that's amazing for you is exercise and eating well. Mentally, just these two things, and obviously working for what you love to do. If you can have these three things from your early morning, from when you wake up to when you go to sleep, along with family that's safe, you know, your safe place, confident, your one or two relationships that are everything to you, you should be okay. But I mean, you have to work every single day, but you should be okay. आपके सारे एक्सपीरियंस ने आपके पर्सपेक्टिव या वर्ल्ड व्यू पे कोई इफेक्ट डाला है, कोई आपका चेंज आया इनमें? हाँ, I think it's बहुत utopian होता है, but I tell people this, that, you know, I wish you could be kinder and more understanding. I wish we would listen to people more instead of criticizing. I feel like the world has become like integrated, but also less tolerant. You know, sometimes you think that with the entire world opening up, like now you can just, with that phone in your hand, access the entire, you can actually from your phone see a city and walk through it. When I was growing up, that was, you literally had to go to places to see them, otherwise there was nothing, just picture books and stuff. So, you know, you think with globalization, there would be more tolerant, like people would be more tolerant because they're exposed to more culture, but I feel like the world has become angrier and less tolerant, and that's the only thing. I just wish that people would listen more and be kinder and, you know, more empathetic towards people that have been through things in their life and continue to right now. You know, just look at what's happening in just this part of the world, just our region, from Pakistan to Turkey. It's, you know, मेरे साथ जो हुआ था 4.5 साल में, people have been, मेरे किडनैप होने से पहले सीरिया में जंग थी और अभी तक है. You know, so Afghanistan is another. कितनी families हैं, कितने आम लोग हैं, their lives have been torn apart because of this. So yeah, I think you just need a more tolerant and kinder human race. So before we wrap up this conversation, हम एक छोटा सा rapid fire session करना चाहते हैं आपके साथ. Okay. ठीक है? बहुत easy है, आपको बिल्कुल भी इसमें डिप्लोमेटिक होने की ज़रूरत नहीं है. What is your weirdest fear? I'm scared of needles. Needles. Yeah. Wow. If you weren't famous, what would you be up to right now? I would be at office working a very boring desk job, which I do every day. You're still doing that. Dumbest way you've been injured. Sorry? Dumbest way you have been injured. In captivity or? Not in captivity. Oh, all of these questions are for outside of captivity? It's a tough one. I've broken my ankle being very stupid in football. It was very painful.
But I think the worst way that I've been injured is that I walked into the back of an AC. वो पुराने ज़माने के नहीं होते थे डब्बे जो बाहर निकले होते थे और मैंने अपना सर फाड़ लिया. And I was not walking fast either. I was just literally walking on the boom. Nice. A food that you can eat every day other than Maggie. वो आप खा चुके हैं बहुत अरसा 4.5 साल. उसके अलावा. That was mean. Nihari, but you know, I want to say Nihari. I just feel like, I think I'm gonna go with Nihari. I could eat Nihari every single day. Nice. Most interesting thing you have read or seen this week? Read or seen this Seen week? this week. I just got Wasim Akram's book, so I'm really excited. I'm his biggest fan. He's my, like, I know log samajhte hain ki main Manchester United, and I am. But Wasim Akram is my #1 athlete of all time, favorite person, crazy fan. So I'm really excited to read his book. Wow. What would you like remembered about you? About me, that I was patient when Allah tested me at a very difficult time in my life. Nice. One politician and one actor you rate as a perfect 10. Politician? Yes. None. As a matter of fact, there's not even a politician I'd rate, and that's very unfair. Bilawal is, I'd rate Bilawal a very high in the thing, but you know, he has a long way to go, but he's the best out of them. For me, don't abuse me for it. I also like all the other guys. Actor, my wife. She has 2 TV shows. Okay, I have watched every single episode. As a matter of fact, I went to Murray. I drove down to Murray, okay, and she was filming her show. And I went and sat down like any other normal fan would and watched the episodes film and, you know, took care of everyone there. And you can ask like the other actors, like Afzal was there and a few other guys, and they were like, you know, look at him, now that's what you call. And I was saying, listen, I'm just a fan. I'm just a big fan. I'm just here as a fan. And she hasn't watched her own episodes. I've watched them all. I've made my mother watch them. I've made my sister watch them. I've made my brother watch them. And I watched them with them each time. So I haven't even seen, like, for example, you know, Last of Us 2 abhi ek show nikla hua hai. I love it. It's my favorite show right now. मैंने episode एक बार देखी, खत्म. So you can't look at me like this. Okay. Your most useless talent. Talent? Yes. I don't have a useless talent. Every talent that I didn't even know I had got me out of Taliban captivity. I am an extremely talented guy. No, my most useless talent is that I play the guitar, I sing, and I do stand-up comedy, and only my friends know about it, nobody else. और हमें कभी ये देखने को मिलेगा? कभी भी नहीं. ये तो जाती है. ऐसे कहाँ करें? You have to like attend like a friend's, very close friend's wedding or something, and if you're lucky, I'll sing or dance or do फिर आप हमें routine. बुलाइएगा. प्लीज हम अपना कैमरा बोरिया बिस्तर लेके आएंगे. Inshallah. Thank you so much. Thank I you. thoroughly enjoyed our conversation No, and I thank hope you. हम Thank दोबारा you for कभी having बैठें me. और Such a दोबारा pleasure. कुछ ऐसी बातें करें, इमोशनल भी, और आपका डार्क ह्यूमर भी हमें देखने को मिले. हो सकता है अगले इंटरव्यू में आपसे कुछ गवाह भी लें. Okay, done. Done हो क्या चलें. Thank you so much. Thank you. I'll catch you guys with another episode next week. Till then, stay tuned and please don't forget to subscribe our channel. Allah Hafiz.